भी अभी अच्छा मोमेंटम है, लेकिन हम एज ए सुपरवाइजर हम रेगुलेटेड एंटिटीज को सुपरवाइज करते रहते हैं, और हर एक सुपरविजन में हमारा ये कोशिश रहता है कि पहले जो सुपरवाइज्ड एंटिटी है, बैंक हो या एनबीएफसी हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनके साथ डायरेक्टली हम एंगेज करें, डायरेक्टली उनसे बात करें और उनको कहे कि आपका ये खामियां है, यहां आपने रेगुलेटरी वायलेशंस आपने किया है, इसको आप सही करिए, अब सही दिशा में आपके जो बैंक हो या एनबीएफसी हो उसको आगे बढ़ाइए, और हमारा रेगुलेटरी गाइडलाइन से आप यहां आपका डिविएशन हो रहा है, इसको करेक्ट करिए, सही कदम उठाइए। और उसके लिए हम काफी टाइम भी देते हैं। जब एक्शन नहीं लिया, ये मैं जनरल सेंस में कह रहा हूं, कोई एंटिटी स्पेसिफिक रिप्लाई ये नहीं है, और जहां एक्शन टाइमली नहीं लिया जाता है या इफेक्टिव एक्शन हमको दिखाई नहीं देता है, वहां पे हमको पब्लिक इंटरेस्ट में, कस्टमर इंटरेस्ट में, डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट में, ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के इंटरेस्ट पे कुछ कदम उठाना जरूरी हो जाता है। और वो कदम हम इसीलिए उठाते हैं क्योंकि रिजर्व बैंक जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिस्टम का कस्टोडियन है। रिजर्व बैंक हमेशा इस मामले में कमिटेड रहा है, आगे जाके कमिटेड रहेगा, और आपने कहा मजबूत से खड़ा है, रिजर्व बैंक बिल्कुल मजबूत से खड़ा है। गुड आफ्टरनून गवर्नर। So, public debt has been high for 3 years now because of COVID spending by governments across the world. So, what risks does RBI see specifically now to raise this as a risk factor, and what are the spillover risks for this for India? You see, I was raising it in a global context, not in the context of India. The India part of the information I have given just by way of information. But my reply was in the global context. You know, you see the footnotes of my monetary policy statement, all the supporting data is given. By the end of this decade, global debt to GDP of EMEs, advanced economies all put together is expected to exceed 100%. आज के तारीख में, on today's date and in future, very surprisingly you will notice that the debt to GDP of the advanced economies are actually much higher than the debt to GDP levels of the emerging market economies. और फिस्कल डेफिसिट, कई सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं जहां पे फिस्कल डेफिसिट अभी भी बहुत अधिक है, 7%, 8% उस रेंज में है। सो फिस्कल डेफिसिट के लिए वो बोरो करते रहेंगे। जब बोरो करेंगे, अगर वो रिजर्व करेंसी है तो उसमें मनी सब आप जो व्हाट यू कॉल एज लाइक क्रिएटिंग न्यू मनी, प्रिंटिंग नोट्स। सो देयरफॉर these are kind of things, if the debt has to be sustainable for the long-term stability of the global financial system. So therefore, I have raised this as an issue which can create a future, which can become a future source of stress to the global financial system. So far as India is concerned, you please again look at my statement. I provide the data in the footnote. The IMF fiscal monitor gives out the data for India. The debt to GDP for India had gone up to 88%. General government, states and center, had gone up to 88% during the COVID year of 2020 because of the various fiscal measures which were undertaken. And it projects how by 2028 it's likely to, it has already come around about 81% or so. By 2028, according to the IMF's fiscal monitor, it is expected to be around 80% or so. So that is the path which I just mentioned by way of information.